हेलो स्टूडेंट्स, शेड हाइब्रिड एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है और नेक्स्ट पेपर जो आपका है वो सोशल स्टडीज़ का है। इस सोशल स्टडीज़ में हम लोग कैसे पढ़ें, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। जैसा कि आपका साइंस का पेपर हो चुका है, आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। और आगे सोशल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप नंबर गेन कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आंसर को कैसे लिखा जाए, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाए। हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा ये सब्जेक्ट बहुत विस्तृत है, लेकिन अगर हम लोग एक सही पैटर्न पर अगर तैयारी करें तो एक अच्छा नंबर हम लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं। बोर्ड के मार्किंग स्कीम को देखते हुए किस तरह से आंसर लिखा जाए, कैसे अपने आप को रिवाइज किया जाए, कुछ चैप्टर्स जो हमारे आ रहे हैं उस पर कैसे फोकस किया जाए, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है एक वीडियो लेकर आपके साथ आज आ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जो आज हम लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जो आज आप वीडियो देख रहे हैं, ये इसमें हम लोग बेसिकली आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की चीज़ों को सबसे पहले देखेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे इंश्योर किया जाए कि किस तरह से हम मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कि ज्योग्राफी आप जानते हैं बहुत ही स्कोरिंग है। हिस्ट्री में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नंबर के साथ हो सकता है कि आपको पूरा मार्क्स ना मिल पाए किसी क्वेश्चंस में, किसी आंसर में, लेकिन ज्योग्राफी में इस बात का एक श्योरिटी रहती है कि हम ठीक ठाक नंबर उसमें पा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर 1/3 अगर ज्योग्राफी आ रहा है तो 1/3 में हम लोग एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि कुछ चीज़ें स्कोरिंग होती हैं, कॉन्सेप्ट बेस होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत सारे आंसर्स आप सही तरीके से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है वही आंसर देने की कोशिश कीजिए। इधर उधर की बातें लिखने से अच्छा है कि आप जो, और अगर आप फोकस होकर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। खासकर ज्योग्राफी में अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, जो चीज़ें सर ने आपको पढ़ाई हैं, बताई हैं, अगर वो सब चीज़ें आप सही तरीके से समझे हैं तो जरूर आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे और ज्योग्राफी को सर जो है अमित सर, आप लोगों के एसएसटी के सर जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं आपको, ये अमित सर आज आपको ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी को कैसे स्कोर किया जाए, किन किन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, किन चीज़ों से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और आंसर को लिखने का क्या पैटर्न होगा, ये सर आज हमको बताएंगे। तो इस वीडियो को जरूर हमारे साथ अंत तक बने रहिए, देखते रहिए, और इसमें मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप किस तरह से अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, कितना अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, ये अमित सर अब आपको बताएंगे। तो मैं अब माइक हैंड ओवर अमित सर को करता हूं ताकि वो आपको अपना लेक्चर शुरू करें। सर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी के सेक्शन से अपने इस मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी में अगर हम लोग अपने सीबीएसई के करिकुलम को देखें ध्यान से, तो हमें पहला जो चैप्टर दिखाई देता है वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का है। आफ्टर देन वी आर हैविंग एग्रीकल्चर। थर्ड इम्पॉर्टेंट इज इंडस्ट्रीज प्लस minerals, and the fourth important is lifeline of national economy। ये चार कंटेंट हमको अपने ज्योग्राफी के मॉड्यूल में दिखाई देते हैं। सबसे खास बात ये होगी इस मॉड्यूल की कि हम किसी भी मॉड्यूल के पार्ट को सेपरेट नहीं पढ़ेंगे, बट इसमें एक लिंक ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जामिनेशन प्रेशर को हम हैंडल कर सकें एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो हम शुरुआत करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट की, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। इसको क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। रिसोर्स नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है जिसको हमें प्रोसेस करना होता है, और उसके प्रोसेस मैकेनिज्म में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। वो टेक्नोलॉजी से एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इट शुड बी इकोनॉमिकली
इकोनॉमिकली फीजिबल, हमें ऐसा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करना है कि वो फिजिबल ना हो। और द थर्ड पॉइंट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये 3 फीचर्स हैं हमारे साथ कि हम अपने रिसोर्स को किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अपने कंट्री इंडिया में रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। रिसोर्सेज आर नॉट यूनिफॉर्म distributed. This is one very important point that you should recall. रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकला? इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकला कि अगर हम लोग डेक्कन प्लेट्यूज के रीजन पे आते हैं, स्पेशली द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड, देयर इज सरप्लस ऑफ मिनरल्स। लेकिन अगर हम लोग पंजाब और हरियाणा के रीजन्स में आते हैं, देन इट इज ए सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर फील्ड। तो हमें यहाँ डिफरेंसेस दिख गए कि हमारे वहाँ रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म न होने की वजह से एक कॉन्सेप्ट नया निकल के आएगा कि हमको रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, रिसोर्स मैनेजमेंट करना होगा। अभी ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट होगा ये 3 स्टेप प्रोसेस है, ये 3 स्टेप प्रोसेस है जिसको हमको समझ लेना चाहिए। पहले स्टेप में वी विल डू द इन्वेंटरी एनालिसिस। इन्वेंटरी एनालिसिस क्या होता है, इसका मतलब इसको समझते हैं। इन्वेंटरी एनालिसिस में हमारे कंट्री में जितना भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हो, फिर वो एबायोटिक रिसोर्सेज हो, बायोटिक रिसोर्सेज हो, जो भी रिसोर्सेज हैं उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी उसका एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हमको मैपिंग एंड सर्वे करना होगा। सेकंड क्या प्रोसेस होगा रिसोर्स मैनेजमेंट में? रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमें अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना होगा। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर शुड बी मैचिंग ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट गोल्स with the development strategy adopted by you. Matching is third process. Matching. रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे वो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। What is this? This is the key concept because in almost all the questions of geography, if you add these words, resource development, या हम जो भी आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होना चाहिए। अभी थोड़ा सा इसको देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो इज द ईयर 1987 जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया बाय द ब्रंटलैंड कमेटी रिपोर्ट के थ्रू दिस concept of sustainable development emerge. This committee has the topic our common future. Now just after plus 5 years, that is in 1992, Earth Summit occurred. वेरी इंपॉर्टेंट ऑकर्ड। इस अर्थ समिट में क्या होते हैं? पहली बात तो ये कहाँ होता है? ये होता है रियो डी जेनेरियो।
इट इज लोकेटेड ब्राजील। और यहाँ पे हम लोग सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स along with plus environmental crisis के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अर्थ समिट 1992 में हुआ था। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप अपने इन पॉइंट्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्स के केस में एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि द नेट सोन एरिया varies for different states. This is very important statement, can be asked in examination. Why? ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा जो स्टेट है पंजाब और हरियाणा, जहां पर नेट सोन एरिया अप्रोक्सीमेटली टोटल अवेलेबल एरिया का 80% है। अप्रोक्सीमेटली, इट इज अप्रोक्सीमेटली, आई एम राइटिंग हियर अप्रोक्सीमेटली। while in states of, suppose in state of northeast states, Meghalaya and Arunachal Pradesh, it is only 11% approx. So this is the question. Now you understand why this appears now. The net zone area varies for different states. Why? इसका हिंदी में क्या मतलब होगा कि कुल बोया गया जो क्षेत्र है वो हर स्टेट्स में अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में ये अप्रोक्सीमेटली 80% है, जबकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में ये 11% है। ऐसा क्यों? इसका आंसर हम दे सकते हैं ड्यू टू वेरिएबल फिजियोग्राफी। फर्स्ट पॉइंट, फिजियोग्राफी में वेरिएशन है। आप पंजाब और हरियाणा के अगर क्षेत्र को देखेंगे, पंजाब और हरियाणा में हमारे पास जो फिजियोग्राफी है वो यूनिफॉर्म्ड फिजियोग्राफी है, जबकि नॉर्थ स्टेट्स के जो रीजन है वहां की जो फिजियोग्राफी है वो माउंटेनस है, जहां पे डेंस फॉरेस्ट है। तो this is the basic reason why we are having net zone area varies for different states. Another important reason can be availability of irrigation facility. कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो स्मूथ हो जाती है, जबकि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं है एंड फार्मर्स आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द रेन। तो वहाँ के केस में जो नेट सोन एरिया होगा वो घट जाएगा, इसलिए नेट सोन एरिया में हमको वेरिएशन दिखाई देता है। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। Then it is very important point, land degradation and soil erosion. So there are several anthropogenic causes. Causing anthropogenic causes that results in land degradation. First is deforestation. You know very well, deforestation. Second is mining and quarrying. Third is
irrigation. Fourth is use of chemical fertilizers excessively. Now, if you see this over irrigation, find is over grazing also. And in states of Punjab and Haryana, this tendency seems very frequently, over irrigation. It result in salinity of the soil. Salinity of the soil. Many times this is asked in examination. Salinity of the soil. And what happens with the salinity? The fertility reduces. Fertility reduces. Now, with the states of Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh, the tendency of overgrazing happened, that results in the land degradation. So this combination of states has been asked in multiple times in the examination, that in states of Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh, land degraded because of the reason. So options will be given to you. You have to pick over grazing. Now the next thing we are going to see, soil. Again, it is very important. As you know that India is having various soil type, out of which we are going to discuss the black soil along with the alluvial soil and some features of the laterite soil also. Laterite. Just revise this very fast. As you know that all the soil type in India are closely related with the rock type. Soil type, key concept examination, soil type closely related with the rock type. Now, this black soil resembles with the igneous rock. This red and yellow soil closely related with the metamorphic rock and the alluvial soil closely related with the sedimentary rock. This is the basic concept, key point for you, sedimentary rock. Now we are going to discuss about the black soil. Some characteristic feature of the black soil, that it has water retention quality. Only important point I will discuss with you, water retention quality, that it holds the water with itself. Second point, when it is wet, it swells, and when it is dry, it is having cracks. Now, very much suitable for the black soil is very much suitable for the cotton. Its another name is regur soil. And it is also known as clay soil. Clay soil means water won't get very deep in the soil. Water won't get very deep in the soil. So these are the very important features of the black soil, very deep in the soil. It is very much important for those regions who are largely dependent upon the irrigation and rain. Okay, now we are completed the black soil, and that is the alluvial soil. It is mostly found in the regions where the river has deposited its residues. Where it is found in the regions of the north plain, along with the coastal area. Now the two important classification of the alluvial soil we are having, one is Khadar
khadar, and another is the gar. This is khadar is known as new alluvial, and it is highly fertile, while bhangar is known as old alluvial, and it is less fertile. Sometimes has been asked in your examination for the 2 marks problem. Now another feature we are going to discuss with you is the laterite soil. This laterite soil mostly found in the regions with the heavy rainfall that causes leaching. Leaching means what? The denudation of the top cover of the soil. Leaching means, you know very well, denudation of top cover of soil. Now this laterite soil, since it is having the leaching process, it is very much deficient in nutrients, and it is very much suitable for, this question has been asked in your exam, suitable for cashew nut, काजू की खेती के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, laterite soil, cashew nut. Now one key point that I would like to discuss with you, that none of the soil found in India is having nitrogen and phosphorus. Very important point, that you can add in almost every soil type, phosphorus. None of the soil, just remember this, none of the soil found in India is having nitrogen, and that is the point why we are using lot of chemical fertilizers like urea, nitrogen fertilizers. Okay, so this cover all the important aspect of the soil cover, the first chapter of your geography. Now we are going to discuss the next point, that is the agriculture. Just key point we will discuss with you, agriculture and industries. First point, industries are closely related. You can add this in both the topic. Closely related means they run hand in hand, closely related to each other. एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं. This agriculture and its allied sector comes in the primary sector of the economy. While the industries comes in the industries and largely covers the manufacturing sector that results in the secondary sector of the economy. Now this agriculture gives the raw material, provides the raw material that we process as the input of the. Okay, now for the agriculture, just listen very carefully. We are having cropping pattern. Largely in India, we are having three cropping pattern. One is Rabi crop, another is Zaid, the last is Kharif. For the Rabi crop, just understand this, for the Rabi crop we require less amount of irrigation. हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, and it is sown in month of October and November and harvested from April to
July. April to June. Major crop is wheat. Then gram, mustard. For kharif crop, it requires more amount of rain and irrigation facilities. Major crop is rice, then soybean, then groundnut. Now, it is with the onset of monsoon, kharif crop is sown, and तो हार्वेस्ट कब करेंगे? इज हार्वेस्टेड बाय January and onward month. Now in between these Rabi and Kharif, we are having the crop of Jayad. It requires less amount of irrigation, water, and it can be sown and harvested also in the month of in between the month of Rabi and Kharif. For the crops, you have to understand mainly the temperature range, the rainfall range, and soil type. 3 points to be understood for this crop pattern. For example, if you are going through the wheat, normally you require 16 degree C roughly temperature and a rainfall ranging 75 centimeter approx, 50 to 75 centimeter approx rainfall is required for the wheat. And for the rice, around 100 to 150 centimeter rainfall is required, and the temperature range should be 23 degree. Now one more beverage crop that mostly occurs asked in examination is the tea crop. For this tea crop, first of all, we should understand that it is the shade loving crop. Well drained, loamy soil is required. It's asked in most of the time in exams. So that's why I'm going through this. Third point, the temperature range, that is very crucial. If you are lowering the temperature from 10 degrees C, then the productivity of the tea will be downward, will be lesser. If you are going above 35 degrees C, the productivity of the tea crop will also going to be lowered. So ideal temperature range is from 20 degrees C to 30 degree. This is the ideal range of the temperature. Ideal range of temperature for tea. After discussing over the agriculture, we are going to discuss over the industries. Now, as we have discussed earlier, that industries are well classified under the secondary sector of the economy. Second point that we have to cover is the industries based on the agriculture, and industries based on the minerals.
So for the agriculture, you have to study chiefly the sugarcane industry, and the cotton textile industry. Cotton textile industry. For mineral industry, you have to just read only iron and steel industry. Iron and steel industry. For this, what you have to read? You have to read the raw materials. The raw materials. Second point, from where this raw material are obtained, places of raw material, and geographical locations. So we are going to deal with the sugarcane. For the sugarcane, what you have to study? First thing, our raw material is sugar industry. Our raw material is sugarcane. Second thing, it is a weight losing. This is a key point. It is a weight losing industry. What does it mean? It simply means that if you are having 100 tons of sugarcane, you will get only 10 to 11 tons of the sugar. This is very interesting point. Tons of sugar. That means it is losing its weight, and since it is losing its weight, therefore the cutting, listen, very important point, cutting and crushing should have minimum time. इधर आपने कट किया शुगर केन को और उसको क्रश करने की जो जगह है वो बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी लूजिंग इट्स वेट. Minimum distance. This is very important one. Now, the locations of the sugar industry. Around 60% locations of the sugar industries are concentrated in the northern Indian belt. Chiefly in state of UP, in state of Bihar. In UP, concentration lies in eastern UP and western UP, such as Muzaffarnagar and इधर अपना गोरखपुर. Now, the 40% remaining concentration lies in the state of Maharashtra. Now, what does it signifies? It signifies that the sugar cane produced, significance of this region has grown. पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि significance of the sugar industries in the regions of the Maharashtra has been rising daily, day by day. Why? ऐसा क्यों? थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग. Sugar cane produced in the regions of Maharashtra has high sucrose content. First point. Second point, that the region, although the northern Indian belt is having high sugarcane production, but the modernized mills are located in Maharashtra. आपका शुगर केन प्रोडक्शन का जो एरिया 60% कवरेज नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट से मिल रहा है, लेकिन जो मॉडर्नाइज्ड मिल्स हैं वो आपके महाराष्ट्र के बेल्ट में हैं. मॉडर्नाइज्ड मिल्स आर लोकेटेड in
Maharashtra. And third very important point, the climatic point, which is very important. Right. Since if you see the map, इधर अपना महाराष्ट्र का रीजन आता है और इधर हमारे पास है एवियन सी. The humidity achieved by this region helps the increment in the contents of the sucrose. The humidity is another important aspect. Why the concentration of the sugar industries are now increasing in the Maharashtra belt. Now the next is cotton textile. Now first point we should discuss that the concentration of the cotton textile industry is mainly in the belt of Gujarat and Maharashtra, Tamil Nadu. But with the emerging of the expansion, this is key concept, expansion of the railway, this textile industry now leading in regions of Kanpur and except Kerala, almost all the South Indian states boosted this industry. So in this statement we see that how the technology, how the expansion of the railway has supported our industry. We see that why the concentration was chiefly in the states of Gujarat and Maharashtra previously. So the first point that we obtained here, that availability of power. In the state of Maharashtra and Gujarat, hydroelectricity is available. Availability of power. Hydroelectricity is available. Second point, cheap labor is also available. Availability of water resources, and another very important feature is regarding the climate. The thread or yarn so obtained during the processing of the cotton is not going to break if the climate is humid, but in the dry climate it breaks. And since the climatic condition of the regions of Maharashtra and Gujarat are very much getting humidity from this Arabian Sea, that's why the thread or yarn remain the flexible and not going to break. Now another last industry that we are going to see is iron and steel industry. This is the mineral based industry. First point. And another important feature is that it is the basic industry. Very important key concept. Basic industry. Why it is basic industry?
because it is giving its output for various number of other industries. That's why it is basic industries. Provides its output as input for various other industries. Now the raw materials involved in the iron and in the steel industry is first is iron ore, second is coking coal, third is manganese, and the fourth is limestone. तो जहां जहां पे भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होंगे वहां पे इन रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए आयरन और जिधर भी होते हैं उधर हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का लोकेशन भी होगा. कोकिंग कोल इज यूज्ड हियर in the blast furnace for melting the iron ore, and the manganese is added for its hardness. So now we are going to discuss our last module, that is lifeline of national. What does it means? Lifeline simply means here the modes of transportation. And we are having roadways, second is railways, third is pipeline, last is airways. Now, case of roadways is chiefly used for short distance communication, short distance travel. Carries less number of people as compared to the railways, third is door-to-door delivery is possible. Door-to-door delivery possible. And another very important point, that it provides as a medium of intermediate in achieving another mode of transportation. This is very important and key concept, mode of transportation. तो मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा. सपोज करो आपको फ्लाइट पकड़नी है, एयरवेज पकड़ना है, आप अपने हाउस से, घर से डायरेक्ट एयरवेज तक नहीं जा सकते हो. यू नीड intermediate way, that is the roadway. You can go through railway also, but roadway is chiefly used. So it is medium of intermediate, placed at the medium of intermediate in achieving another mode of transportation. Now can be easily constructed as compared to the railway. Since the installation of the railway required plain physiography, therefore we are having more roadways as compared to the railways. Railways installation is difficult as compared to the roadways. Now pipeline
Pipelines are used to carry water, crude oil, and various other inputs to the fertilizer plants, various other inputs को हम कह सकते हैं gases, natural gases can also fertilizer plants. For studying pipeline, a very important pipeline is HVJ pipeline. This H stands for Hazira, Gujarat. This is Jagdishpur, UP. This location G stands is located in Madhya Pradesh. That is Vijaya. Very important pipeline, HVJ pipeline. Many times it is asked examination. Now, for the waterway, we will discuss important ports that are very crucial examination. We are having 12 major ports. The first port was Kandala. After the partition of India and Pakistan, the Karachi port gone to the Pakistan. That's why we are left with the Kandala, Gujarat. Now we see the locations of some important ports in the map. The rough sketch. Kandla port. We are having the Mumbai port. मुंबई के ठीक नीचे हमारे पास है जवाहरलाल पोर्ट, which is also known as Nhava Shava port. Goa, we are having Marma Goa port. After then we are having Kudremukh port. In between, just below the Marma Goa, we are having New Mangalore port. Then here we are having Kochi port. Here Tuticorin port, Tamil Nadu. Chennai port. Two important ports are also there. One is Paradeep port, located in Odisha, and one more port which is located in Kolkata, West Bengal. It is Haldia port, located in port. These are the important ports that you should understand. Practice it well on the map. Now, sir will take in the next session we will discuss our remaining portion. Thank you so much.